Hello guys, welcome to Networker. In this particular session, we are going to discussing about HSRP. Okay, so one of the industry leading concept is known as HSRP. Whenever we are doing any kind of RO0 connection or small offices connection, uh, HSRP come into picture. Okay, in some cases this is like HSRP. आपकी वो HSRP हो सकता है, VRRP हो सकता है, या फिर आपकी GLBP भी हो सकता है. These three terminology of same concept, same working principle. बेसिकली ये जो HSRP हो गया, VRRP हो गया या फिर आपकी GLBP हो गया, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हैं जिस फैमिली की नाम है FHRP. ओके, व्हाट इज FHRP? FHRP is nothing but Fast Hope Redundancy Protocol. Okay, inside FHRP there is three member. They are like HSRP, VRRP, and last one is GLBP. Okay, out of that, if I am talking about HSRP, HSRP is Cisco proprietary. Okay, if you have Cisco vendor devices like Cisco router, Cisco switches, you can go with HSRP. It's good to go. But whenever we are dealing with cross-platform devices, like in my industry, I have Juniper network devices and also Cisco network devices or any other vendor devices. In that case, we can achieve the same thing which is achieved by HSRP by the help of HSRP. Okay, and sometime we are also using GLBP. GLBP also a Cisco proprietary protocol. That means only Cisco devices support GLBP. Okay. Again, I repeat their full form. HSRP stand for Hot Standby Routing Protocol. VRRP stand for Virtual Routing Redundancy Protocol. GLBP stand for Gateway Load Balancing Protocol. Is that clear? If I'm talking about why we should learn HSRP, VRRP, and GLBP, is it routing protocol or is it switching protocol? Then remember, guys, it is not switching protocol. It is not routing protocol. Okay, it is not a routing protocol, it is not switching protocol. Then which kind of protocol it is? It is default gateway redundancy protocol. Default gateway redundancy protocol. Okay, again, whenever we are establishing or deploying a network or creating an environment, in environment point of view or network point of view, redundancy is the one of the most important thing. You also hear some terminology like VSS, virtual switch system, stacking. Stacking is nothing but the redundancy concept. So like that, we are also achieve the redundancy concept by the help of this HSR, VRRP, GLBP, and HSRP. Okay, so why we should go with default gateway redundancy protocol? What is the need of default gateway redundancy protocol, and what is the working principle? Let's understand one by one. Let's say in your industry or in your company, you have a router one. Let's say this is Airtel router. Okay, and you have a router two, which is Geo router. Okay, both are connected with their respective ISP. Let's say this is not a single ISP, this is a Airtel ISP, this is a Geo ISP. Both are connected with these different ISPs. Is it okay? So now this two router is connected to your core switches. Okay, as you know, every network devices to going another network. Let's say you are on 192.168.80 subnet. To go different subnet, we do routing. Okay, within a subnet, this is called switching. In between different subnet, this is nothing but routing. But whenever we are talking about, let's say मेरी जो core switch है, इस core switch से मैं अभी इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो core switch के पास कहीं ना कहीं एक डिफॉल्ट गेटवे पड़ा होगा. हमने स्विच में भी डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे सीखा था, आईपी डिफॉल्ट गेटवे इन डिफॉल्ट गेटवे की एड्रेस. तो इस स्विच की कोई एक डिफॉल्ट गेटवे होगा, इस सिस्टम की भी कोई एक डिफॉल्ट गेटवे होगा. इस सिस्टम की जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो स्विच के अंदर डिफॉल्ट गेटवे होगा. मतलब ये सिस्टम के अंदर जो भी डिफॉल्ट गेटवे मैं दूंगा वो कहाँ पे जाएगा, वो स्विच के अंदर वो डिफॉल्ट गेटवे होगा. लेट्स से VLAN 10 है, मैंने स्विच के अंदर VLAN 10 बना, आईपी दिया 10.0.0.1. अगेन यहाँ पे मैंने सिस्टम को आईपी दे रहा हूँ 10.100 मेरी आईपी है एंड 10.1 मेरी क्या है, गेटवे है. तो मतलब मेरी सिस्टम पे पास जब भी कोई डाटा आएगा वो सिस्टम का किसको भेजेगा, स्विच को भेजेगा. अगेन स्विच के पास अगर डिफॉल्ट गेटवे ऐसे ही ओके, स्विच प्रोसेस करेगा. अगर स्विच के पास वो डाटा नहीं है, स्विच अपने डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेजेगा, मतलब अपनी गेटवे की तरफ भेजेगा. अपनी गेटवे स्विच अकॉर्डिंग टू स्विच, ये उसकी डिफॉल्ट गेटवे हो सकता है, ये भी हो सकता है. इज इट क्लियर? सो अभी थोड़ा सा समझते हैं डिफॉल्ट गेटवे है क्या. हमने बहुत कर दिया डिफॉल्ट गेटवे है क्या, डिफॉल्ट गेटवे कैसे काम करता है. डिफॉल्ट गेटवे नॉर्मली अगर ऐसे लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, डिफॉल्ट गेटवे क्या हुआ, क्या है नॉर्मली. जैसे आप एक स्कूल है आपका, लेट्स से दिस इज योर स्कूल. स्कूल के अंदर हमें पता है एंट्री और एग्जिट करने के लिए हमारे पास क्या है, गेटवे, एक गेट है.
ठीक है, इस गेट से बच्चे अंदर जाते हैं और इसी गेट से अंदर बच्चे बाहर आते हैं, राइट। ऑफिस या फिर आप जो कंपनी में काम करते हो वहां पे भी एक इन गेट होगा, एक आउट गेट होगा। ओके। और गेट की सिंपल काम क्या होती है, ट्रेडिशनल वे में भी गेट का क्या काम होता है, अंदर बाहर करना, चीजों को अंदर लेके जाना या फिर लोग अंदर जाना या बाहर आना, दैट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ गेट। ओके, सो लाइक दैट आप कोई भी नेटवर्क, लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क है 10 की नेटवर्क प्लस 8 की नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए और इस नेटवर्क की ट्रैफिक को बाहर लाने के लिए इसकी एक रास्ता होगा, गेटवे होगा, एक गेट होगा, उसको हम नथिंग बट नेटवर्किंग में क्या कहते हैं, हम लोग उसे गेटवे कहते हैं। ओके। सेम नेम यहाँ पे गेट आ रहा है, ट्रेडिशनल वे से हमने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से हमने गेट को उठाया। गेट का सिंपली काम क्या होता है, चीजों को इन करना, चीजों को आउट करना, दैट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ गेट। ओके। सो लाइक दैट गेटवे क्या होता है, एंट्री और एग्जिट ऑफ ए पर्टिकुलर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए, एक नेटवर्क से बाहर आने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी गेटवे की एड्रेस चाहिए। ओके। सो व्हाट, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो गेटवे इज नथिंग बट इट इज एंट्री और एग्जिट पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। ओके। सो अभी मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, जैसे इस स्विच में मैं अभी गेटवे क्या दे रहा हूँ, जैसे दो राउटर कनेक्ट है, मैं इसको एक राउटर की आईपी एड्रेस से गेटवे में दे रहा हूँ। इस स्विच की गेटवे है 192.168 80.20। This is the gateway of this particular system, particular core switch. Okay, core switch के पास जो भी ट्रैफिक आएगा, अगर core switch के पास नहीं है वो ट्रैफिक, वो इसमें भेजेगा, इस रूट पे बेसिकली ट्रैफिक को भेज देगा। ये रूट कहाँ है, यहाँ, मतलब ट्रैफिक आपके एस से जाएगा आईएसपी तक। ठीक, ओके, गुड टू गो। लेकिन लेकिन हम थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन में जाते हैं, लेट्स से आपकी ये राउटर हो जाती है फेल। इन दैट केस आप क्या करोगे, आपकी ट्रैफिक यहाँ मूव होगा, लेकिन नॉर्मली वे में नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि गेटवे तो एट ए टाइम, हमें पता है सिस्टम में एट ए टाइम एक ही गेटवे हम दे सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी सिस्टम भी दिखाऊं ना, लेट्स से मैं आई एम ओपनिंग माय सीएमडी आईपी कॉन्फ़िग, देखो यहाँ पे आपको एक गेटवे मिलेगा। कहाँ मिल रहा है आपको गेटवे, लेट्स चेक। ये देखो, यहाँ पे आपको कोई गेटवे एड्रेस मिल रहा है, इज इट विजिबल और नॉट, 10.115.201.93, दिस इज द गेटवे, मतलब मेरे सिस्टम के पास मैं कोई भी रिक्वेस्ट करूंगा ना वो इसी एड्रेस पे जाएगा, दिस इज द गेटवे एड्रेस। ओके। ये मेरी मेरी घर पे जो आईएसपी की दिया हुआ हब है या फिर वाईफाई राउटर कह सकते हो, उसके अंदर ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो पहले मेरी सिस्टम से डाटा जाएगा कहाँ पे, मेरी वाईफाई तक, या फिर वाईफाई एयर फाइबर तक, फिर एयर फाइबर से फिर आगे रूट होगा इंटरनेट तक। इज इट क्लियर? सो सही, सेम चीज को आगे हम लेके चलते हैं थोड़ा। सो अभी मेरी इस सिस्टम के अंदर कोई एक आईपी एड्रेस एट ए टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, गेटवे एट ए टाइम एक ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप लोग, ऐसे नहीं कि एक सिस्टम में मैंने चार गेटवे एट ए टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया, आप कर ही नहीं सकते। एक सिस्टम में एक ही गेटवे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एट ए टाइम, सिंगल गेटवे। तो इसकी लेट से मैंने गेटवे दे दी जाके, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, 192 192 168 8.1 which is this interface IP एड्रेस। तो यहाँ पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है ये फिर यहाँ पे भेज रहा है 80.20। सो अभी पूरी ट्रैफिक मेरी कैसे जा रही है, 80.20 से, भाया 80.20 से मेरी ट्रैफिक इंटरनेट तक जा रही है। लेट्स से मीनवाइल आपकी ये वाली जो राउटर है ये हो जाती है फेल, मे बी पावर फ्लक्चुएशन की वजह से इशू आ गई, राउटर आपकी बैठ गया, या फिर आपकी पावर राउटर की ये वाली इंटरफेस डाउन हो गया, या फिर ये भी हो सकता है आपकी आईएसपी से जो फाइबर आई हुई है फाइबर कहीं पे ब्रेक हो गया, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल केसेस हो सकती है। केस स्टडी अगर आप करोगे ना तो मल्टीपल, मे भी आपकी फाइबर कट हो सकता है, मे भी आपकी पावर इशू हो सकता है, मे भी आपकी कस्टमर एज की जो राउटर है वो खराब हो सकता है, प्रोवाइडर एज की जो राउटर है वो खराब हो सकती है, या फिर इंटर कम्युनिकेशन जो आपकी आईएसपी और आपके बीच जो राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं उसमें भी कुछ गैप, कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये गेटवे आपकी बैठ गया। सो इन दैट केस आप इंटरनेट से अनरीचेबल हो जाएगा, आप इंटरनेट को रीच नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो गेटवे था वो सिंगल था, और गेटवे जो था वो गेटवे आपकी बैठ गया है। इन दैट केस आप क्या करोगे, आपकी ट्रैफिक यहाँ जाएगा, यहाँ ड्रॉप होगा, कि आगे है ही नहीं, कोई रूट ही नहीं मिल रहा उसे जाने के लिए। सो मेन वाइल आप मैनुअली क्या करोगे, इस स्विच को ओपन करोगे और इसकी गेटवे को चेंज करोगे, क्या 80.20 से 80.10 करोगे। अब मैनुअली आपको ये करना पड़ेगा, इज इट ओके? आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा, बट व्हाट अबाउट, लेट्स से ये तो मैं कह रहा हूँ ऐसी एक कंडीशन जहाँ पे आपको मैनुअली काम करना पड़ा है। लेट्स से आपके पास मोर देन 1000 सिस्टम है यहाँ पे, लेट्स से आपके पास मोर देन 1000 सिस्टम है, 1000 सिस्टम। आप यहाँ पे जाके दे रहे हो गेटवे, लेट्स से दे रहे हो कोई एक सिंगल गेटवे लेके चलो, एक कोर स्विच है, दूसरा भी एक यहाँ पे कोर स्विच लेके चलो, ठीक है, उसकी आईपी एड्रेस 20 है, इसकी 10 है।
आपने 10 आईपी एड्रेस इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया, ट्रैफिक सारे ऐसे जा रहे हैं, ये कोर स्विच खराब हो गया, सो इन दैट केस आपको थाउजेंड ऑफ पीसी में गेटवे चेंज करना पड़ेगा मैनुअल, व्हिच इज नॉट ए feasible way. ओके, सो इन रियल एनवायरनमेंट ये चीज आप कर ही नहीं सकते कि अब मैं गया जैसे ही मेरी गेटवे खराब हो गया या फिर मेरी गेटवे बंद हो गया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी गेटवे की आईपी को चेंज कर दिया फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, मैनुअली मैंने चेंज किया, बट इन प्रोडक्शन नेटवर्क, इन रियल मैनेजमेंट नेटवर्क, जैसे आपके पास 50 सिस्टम है। ओके, 50 सिस्टम में मैं जाकर मैनुअल आईपी एड्रेस चेंज करूंगा, सबके डिफॉल्ट गेटवे चेंज करूंगा, व्हिच इज नॉट अ feasible way. So in to mitigate this kind of issue, we have a protocol or we have a some technique which is called FHRP technique. ओके, हमारे पास क्या है, FHRP की टेक्निक्स है। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑटोमेट कर देंगे सब कुछ, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक हम कर देंगे इन द सेंस, मैं यहाँ पे सिस्टम में जो आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 80.10 दे रहा था, या फिर इस कोर स्विच पे जाके मैं आईपी क्या दे रहा था, लेट्स अभी कोर स्विच की बात नहीं कर रहे क्योंकि मल्टीपल चीजों को एक के साथ एसआई में हम कंबाइन नहीं कर रहे। अगर नॉर्मली मैं बताऊं, लेट्स से ये आपकी एक L2 स्विच है। ओके, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इसकी गेटवे लेट्स से 80.10। ओके, 80.10 अगर खराब हो गया तो मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, इसे 80.20 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। एक सिस्टम में ओके मैं कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास मोर देन 1000 की सिस्टम है तो इन दैट केस मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 सिस्टम पे रियल टाइम में करना इज नॉट ए फिजिबल सोल्यूशन। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 80.10 नहीं दूंगा, ना ही 80.10 दूंगा, ना ही 80.20 दूंगा। यहाँ पे एक VRRP से निकला हुआ एक आईपी दूंगा, जो कि होगा लॉजिकल इन द नेचर। ओके, अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में इसे बताऊंगा, क्योंकि हम डिटेल इसे डिस्क्रिप्शन डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं इस टॉपिक को। सो लेट मी ओपन माय, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस particular change. Okay, लेट्स से जैसे आपकी ये वाली एक राउटर है, इज इट क्लियर? लेट्स से दिस इज योर राउटर 1, दिस इज योर राउटर 2। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। If I do, let's say this is your ISP, here your router 1, here router 2, and here your PC. Okay, and PC is connected to L2 switch like that. Like that, you guys are connected your environment from this to from this. Okay, this is IP address 80.10, this is 80.20, and this is your ISP, that's 8.8 dot something. You are connected to this. Your IP address is 80.100. Okay, you have at a time one gateway 80.20. So your traffic first go to switch, then switch to this, then this to this like that. Okay, all traffic you are going to this to this. Okay, if this router is fail, in that case you have to change the gateway to 80.20 to 80.10. Okay, but in real environment, if you have 100 of system, then at a time you can't change the IP address of all systems. Okay, for that we are configuring a VRRP over here or HSRP. But in this today's session, we are discussing about a VRRP. Okay, we are configuring VRRP. We are creating a logical IP address. Let's say logical IP address is 80.90 and like that. And we are not configuring 80.20 or 80.20 over 80.10 gateway in this system. We are configuring 80.90 gateway in this system. So whenever this, let's say earlier my traffic is goes via like this. If this router goes down, traffic automatically move to this. Okay, all things are achieved by HSRP. Let's understand how HSRP is actually work in real production or real environment. Okay, let's move toward your HSRP configuration. So this is how our topology actually looks like. Here is a system. If I am going to this system and accessing this system, I'm checking is there any IP configuration. There is no IP configuration. Also, I just demonstrate what we just discuss. Okay, let's configure first. Now I configure this router first. Okay, good to go. This is, let's say, host name I'm changing Airtel router. You can change anything. Interface is 0/1.
IP address, and I am doing LANs configuration first. Okay, 80.10, 255, 255, 255, 0, then no shut. Go to one interface, E0/0, IP address 10.0.0 to 1. I'm doing subnetting here, no shut. Okay, then do W. So that's the configuration of this particular router. Now accessing the second router. In second router, we have to do nothing. Configuration the same like that. Let's say this is Geo router. Okay. Interface E0/1. IP address 192.168.80.20. Again, this is my LAN interface. Okay. And Ethernet 0/0 is my WAN interface. Okay. 10.0.0.5, 255, 255, 252. Again, no shut. Do that. Okay. Now go to ISP. In real environment, you are not configuring the ISP router. This is handled by ISP. Okay, actually this is a switch ISO. Okay, sorry. Now very Ethernet 0/0. I'm creating a loopback just for demonstration purpose. Okay, so this is ISP. We have to do nothing in ISP end. Okay, that's it. If I'm open my Geo router, am I able to access this 8.8.8? Actually, this is the DNS server which is configuring in this ISP. Am I able? I'm not able to ping. Earlier, I am not able to ping. Instead, I am configuring some kind of routing protocol over there. Okay, let's say router OSPF. Yeah, router. Yes, let's configure OSPF. Network 0.0.0.0. Okay, okay. If I'm checking so IP OSPF neighbor, there is one neighbor which is 80.10. Okay, so 80.20 is also up 80.10. So now these two neighbors are up. And why I am configuring 80.10 over here and 80.20 over here, just because both these two routers are connected to a LAN segment, which is my switch. Okay, let's start this switch also. All these two routers are connected to a LAN segment, which is my switch. Okay, so if I am now ping, let's say this is my Airtel router. If I am ping 8.8.8, now I am reachable. Okay, let's see. So I have to do yeah. Now I am able to ping. Now I am able to ping OSPF 8.8.8, which is my ISP network. From Geo router also I am able to ping. As you can check, now I am able to ping. Okay. Now to go to this system, I am accessing this system right now, and I am checking is there any IP configuration. Let's configure the system IP address 192.168.80.100/24, 192.168.80.10. Let's say now I'm configuring router, Airtel router as my gateway. Okay. Okay, IP. Sorry, it's my point. If I am now checking, am I able to access this gateway? Yes, I am able to access this gateway. If I am able to access Geo router gateway, yes, I am able to get it. If I am checking,
this IP, this in this system, what is the gateway? 80.10. That means all the traffic are goes via this Airtel router or router 2, you can say. If I'm ping 8.8.8.8/t, that means traffic is going via this router. If I'm opening this router, let's open this router, debug IP ICMP. If I'm enabling it, okay, sorry. Okay, as you can see, now packet are transmitting using this router 2. If you same time, if you are enabling this geo router, you can say router 2. Let's say I'm also debug on here, debug IP packet. There is no packet flow. There is no packet flow. There is no packet flow in this. In this, there is a routing algorithm packet flow are actually happening. Okay, routing packet flow in the sense the OSP packets are actually transmitting. Okay, nothing else is transmitting over there. But if you are checking over there, there is source IP address 80.10, destination is this, and this is the ICMP packet are transmitted. Okay, these are the ICMP packet are transmitted. So for conclusion region, if I'm talking, this system IP address is getting this system IP address is nothing but so IP. If I'm checking this system IP address is 80.100 and gateway is 80.10. And where is the actual gateway? This is the actual gateway using router 2. Okay. If if let's say again ping, if I am down the router or if I am down the particular interface Ethernet 0/1, then shut. As you can see, traffic are drop. Traffic are timeout. Okay, traffic is not going to internet. So in real environment, what I can do, I can again change my I can again change my gateway. I'm changing the gateway from router 1 to router 1. Now again I am if I am again ping and all traffic are goes via this. Okay. So if this is the traditional way. Okay. Now this turn off this. This is the traditional way. So but in modern engineering, what we are doing, or you can say modern networking, what we are doing, we have some protocol to automate these things. How I can do this automation actually? Let's open this two router at a time. Okay, I am doing a VRRP configuration, so accessing the LAN interface. Okay, vrrp vrrp group number, then IP address 192.168.90. This is the IP address of vrrp. Okay, and VRRP have some theoretical concept also, which we are discussing further session. In today's session, we are also only discuss the practical approaches of HSR VRRP. Okay, interface E0/1, and this is the IP address. This is the virtual IP address in between Ethernet 1 and 0/1. In between two router, this is the virtual IP addresses. Okay, so if you are not checking, so VRRP, this is the master. There are some concept of master or child. There is some concept of master and standby. We are discussing earlier session. Okay, it's a earlier session is pure theoretical portion of VRRP, but today's session we are only discuss the practical approach of VRRP. Okay, this is the backup. This is the master. This is the backup. You can say this is the master. This is the slave. Okay, the router which is showing master. That means the all the traffic are flow using this master router one. That means all the traffic are going via this. Why not this? So there is some region of election like where highest IP address will be chosen, highest interface IP. So like that. So if I am now going to this in system, let's say this, I am going to this system and I am configuring the virtual IP address as my gateway. Okay. So if I am now again start ping to the internet. Okay, sorry. Okay. Now traffic goes. Traffic goes via home. Traffic goes via master. This router one going via master. As you can see, this is router one. This is router one going via this. Okay. If I am down this interface, if I am down geo interface Ethernet 0/1 and shut. Traffic is do nothing. There is two packet drop and traffic is moved to Airtel router. Now this is become a master. So VRRP, this is become master. Okay. Now all the traffic are goes via Airtel router. Getting the point or not? Okay. There is some packet drop showing in this router. Let's say.
What a moment. Show VRRP. This is the master. This is the master. Okay. Now if I'm try to ping, now all the traffic goes via home. If I'm checking, so VRRP, who is the master? This is the master. And what is this? So VRRP, this is the backup. If master goes down, let's say master interface is goes down. In that case, interface E0/1. Let's assert all the traffic goes to this router to this router. Okay. So that's the thing we are actually having to रिमेम्बर इन HSRP. ओके. सो HSRP के अंदर भी बहुत सारे चीजें VRRP HSRP जो अब कोई भी उठा लो VRRP उठा लो HSRP उठा लो GLP उठा लो दोनों तीनों के कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन सबके अंदर कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके लिए हम प्योर थियोरेटिकल पोर्शन रखेंगे. बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोगों ने वो देखा कि VRRP नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम इन बिटवीन आवर एजेस. ओके. फिर HSRP की या फिर VRRP या फिर अभी हम VRRP की जिसमें बात कर रहा हूँ VRRP के अंदर फिर आती है ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट. बेसिकली आप क्या करते हो आपकी ISP की जो इंटरफेस है या फिर ISP की जो इंटरफेस की स्टेट है उससे आप कैसे ट्रैक कर सकते हो उसे कैसे मॉनिटर कर सकते हो. सो लाइक दैट वी हैव ए different session, okay, in which we have discussed all the theoretical and practical portion of VRRP, GLFP, and HSRP. In this particular quick session, we are actually discussing how actually we configure VRRP in a small office or in our edges. Okay, this is not the actual. This is not the actual class related to VRRP. This is the quick class irrespective to VRRP that how we can configure VRRP. We are not deep and dive in VRRP. Okay. So in we are with concluding this session, what is VRRP? VRRP is nothing but it is a default gateway redundancy protocol. By the help of this VRRP, we can provide default gateway redundancy in our edge devices. Like this is our edge device. Both in between both edge device, there are redundancy. If one edge device goes down, then traffic will automatically shift from primary to secondary and vice versa. Okay. In earlier upcoming session, we are discussing how we can use VRRP full potentially and you can say how we can use full power of VRRP. Okay. So with that, thank you all to joining this session. Okay. Thank you.